This is the second part of our discussion on payback period method, and this is 174th module of our course of financial management. Before this module, in the first part of our discussion, we talked about the payback period, and we saw that how this payback period is calculated and how we make a decision on the basis of the results of payback period. Just to give you a recap, we said that if the payback period of a project is less than our required payback or equal to our required payback period, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं. Now, the first part of this discussion of discounted cash flow methods, which we said was that these methods are called DCFs or discounted cash flow methods. हमने कहा था डिस्काउंटिंग का मतलब है प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना, लेकिन अगर हम इस पेबैक पीरियड की कैलकुलेशंस को देखते हैं जिसमें हम कैश इनफ्लोज को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो हमें नज़र आता है कि वी हैव नॉट डिस्काउंटेड दीज कैश फ्लो. इसको हमने डिस्काउंट नहीं किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है. So this payback period has some flaws, and the two basic flaws or two basic issues or problems of this payback period are that number one, in its original form, payback period ignores time value of money. Because it ignores time value of money, so it cannot be called a discounted cash flow method. Although we have a solution for that, which we'll just discuss in a few moments. The other problem with the payback period is that this method only is concerned to the time period of recovery of the initial outflow. यानी ये मेथड अपनी पेबैक पीरियड के बाद के आने वाले कैश इनफ्लोज को कंसिडर नहीं करता. यानी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज 5वें साल पर ही ख़त्म हो जाए और 5वां साल ही उसका पेबैक पीरियड भी हो, और हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज 5वें साल से लेकर 10-15 साल तक चल रहे हों और उससे बहुत सा मज़ीद कैश इनफ्लो होने वाला हो. बट द पेबैक पीरियड does not account for that. So the second flaw is that it ignores cash flows after the payback period. Now, what we can do to resolve these issues? The first issue, which is ignoring the time value of money, this can be resolved simply by not considering the actual cash inflows, but by taking the present values of these cash inflows. So if you have a look at the table, you would see that in the second column where cash flows are written, we have got original cash outflows and inflows, that is 100,000 outflow and 20, 30, 40, 50,000 cash inflows. But then we have got the third column where we have removed this flaw of a payback period method and we have discounted, we have calculated the present values of those future cash inflows. जो पहली outflow की amount है, because it is at the 0 point and that is the present value, so we need not to further discount it. ये इसी तरह नजर आएगी आपको. लेकिन the other inflows from year 1 to year 5, you can see that at 10% we have calculated their present values, which are less than the original amounts, that is almost 18,000 and 24, 30, 34, 37,000. Now what we will do is that we will again calculate the accumulated cash flows. But this time we are not accumulating the original cash flows, but we are accumulating the present values of those cash flows. So you can see that the payback period seems to be somewhere equal to 4 years. यानी 4th year से कुछ कम हमारा payback period नज़र आ रहा है, जो कि इसी कैश फ्लो की ओरिजिनल वैल्यूज़ को लेने से 3 years हमारे पास आ रहा था. So if we calculate the present values, if we use the discounted values, then our payback period will be
extended. But yes, this one flaw can be removed. Now let's have a look at the other flaw. यानी हमने कहा कि पे बैक पीरियड की एक और खामी है. वो खामी ये है कि जब पे बैक पीरियड मुकम्मल हो जाता है उसके बाद आने वाली कैश फ्लोज को ये कंसिडर नहीं करता. To understand this, let's have a look at this table where we have got two projects, A and B. You can see that the cash inflows of project A are ending at the end of year 5, but the inflows of project B are continuing till the end of year 8. तो हमारे पास जो project B है उसके अंदर 5th ईयर के बाद आने वाली जो कैश इनफ्लोज हैं या 4th ईयर के बाद आने वाली कैश इनफ्लोज हैं उसको ये मेथड कंसिडर नहीं करता. अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट्स ए और बी को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए का 100,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट 3rd ईयर के एंड पे रिकवर हो रही है. सो दैट मीन्स द पे बैक ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 3 years. लेकिन प्रोजेक्ट बी की 100,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट 3rd ईयर के एंड तक रिकवर नहीं हो रही बल्कि वो 4th ईयर में जाके रिकवर होगी. सो ये बात हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट ए का कम है और प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है क्योंकि 100,000 प्रोजेक्ट बी के चौथे साल में जाकर रिकवर हो रहा है. And so if we have to compare and select one of the two projects, we would definitely say that on the basis of results of payback period, project A is better than project B. But actually, is it the case? Is it the case that project A is better than B? No. Why? Because the cash inflows of project A will end after 5 years, but project B will keep on giving us the cash inflows till the end of 8th year. So this is the second flaw of this method, and there is no way to rectify or to remove this flaw from this method of discounted cash flow method. So हम यहाँ conclude करते हैं ये कहते हुए कि पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ओरिजिनली नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यूज लेके उसको डिस्काउंटिंग करके DCF बनाया जा सकता है. लेकिन इसका वो दूसरा फ्लॉ कि वो पे बैक पीरियड के बाद की कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस मेथड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रेफर्ड मेथड of making capital investment decisions.